Yes, here I have taken one more example from a site. See, star schema in a data warehouse is the center of the star, whereas having one fact table and number of associated dimension table. See over here, example करते हैं directly. In the following star schema example, the fact table is at the center and the rest of the tables are the dimension tables which consist of uh, dimensions like dealer, branch dimension, product, date dimension. अब ये जो fact table है इसमें क्या है? Dealer ID है that is belonging to this table. Model ID is there, but okay wait, branch ID है, डेट आईडी है एंड प्रोडक्ट आईडी है. फाइन. सो ये सब जो फैक्ट टेबल्स है, फैक्ट टेबल्स में दिया है, लेकिन मॉडल टेबल का यहाँ पे इट इज नॉट देयर. हाँ, ओवर हियर इट इज, सॉरी, इट इज देयर. प्रोडक्ट आईडी एंड मॉडल आईडी इज ओवर हियर, इट इज इंक्लूडेड. बट इफ यू सी, dealer id is the primary key of this table, branch id over here is the primary key of this table, date id is primary key again here, and product id is primary key. अब ये जो मॉडल आईडी इंक्लूड किया है यहाँ पे, so model ID is, this table is already having a primary key, that is product ID. So this model ID is nothing but a foreign key. That is, it is belonging to some else table. So this is the primary key of दूसरा tables available. So ये जो होता है, this is basically the star schema. अब ये tables को जब हम और refine करते हैं, that is called as snowflake schema. See, Snowflake schema in a data warehouse is a logical arrangement of tables in a multidimensional database such that the ER diagram resembles a snowflake shape. A snowflake schema is an extension of a star schema and it adds additional dimensions. So, this is second. Yeah, ये देखो, अभी हमने देखा है कि स्नोफ्लेक स्कीमा इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ स्टार स्कीमा, कि अगर स्टार स्कीमा को हम और ज्यादा डिटेल में डालें, रिफाइन करें, तो वो एडिशनल टेबल्स ऐड करता है, उसको हम स्नोफ्लेक स्ट्रक्चर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे डीलर आईडी है. डीलर आईडी इज द प्राइमरी की फॉर दिस टेबल, बट दिस टेबल इज ऑल्सो हैविंग टू मोर keys, that is location id and country id. So this location id belongs to this location table, country id belongs to this country table. So ये मैं बोल रही थी कि ये लोकेशन टेबल का प्राइमरी की है, बट यहाँ पे यूज किया है इसके लिए डीलर टेबल के लिए, दिस बिकम्स द फॉरेन की. सो इफ यू सी द स्टार्ट स्ट्रक्चर, जो डायमेंशन टेबल था, दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मोर डायमेंशंस. Similarly over here, product id is the primary key for this table, but it is also having model id which is the primary key, sorry, variant id, which is the primary key for this variant table. Similarly, you can have model ID, you can have one more dimension as model also. So ये product is further divided into two more tables. तो जब ये dimension tables in detail हम refine करते हैं, in detail हम add करते हैं, tables पे connect करते हैं, that structure is known as snowflake schema. So I hope it is clear now. The main see benefits क्या क्या है? The main benefits of snowflake schema is it uses smaller disk space, क्योंकि बहुत छोटे छोटे tables है, even though बहुत सारे हैं, बहुत छोटे छोटे informations रहती है उसमें. It is easy to implement a dimension in it is easy to implement a dimension like कि हम कभी भी कोई भी table create कर सकते हैं. Sorry, I am not able to speak continuously, so please cooperate with that. ड्यू टू मल्टीपल टेबल्स क्वेरी परफॉर्मेंस इज reduced, क्योंकि मल्टीपल टेबल्स अवेलेबल रहता है, इंफॉर्मेशन एट हैंड प्रेजेंट रहता है, सो क्वेरीज का आंसर इजीली मिल जाता है, so performance is not hampered. Primary challenge is that if you will face while using stars snowflake schema is that you need to perform more maintenance efforts because of the more lookup tables. हाँ, सिर्फ एक ही एक प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे टेबल्स अवेलेबल हो सकते हैं, इसके लिए टेबल्स को मेंटेन रखना, अपडेट रखना, प्रॉपरली रखना इज द प्रॉब्लम और से चैलेंजिंग टास्क. This is the difference between star schema and snowflake schema. I'll send you the link. Please go through it very well. And in case of doubts, let me know.
Yeah, next we are starting with fact constellation schema. I am taking it from the sites because the PDF notes over here has information, but that is like very restricted, so it is difficult to understand. Facts constellation is a schema for representing multidimensional model. It is a collection of multiple fact tables having some common dimension tables. It can be viewed as a collection of several star schemas and hence it is also known as galaxy schema. Now if you see कि star schema में हमने देखा था एक fact table and there are dimensions. Snowflake में हमने देखा dimension के dimension tables होते हैं. So galaxy schema is a schema where you have more than one fact table and there are dimension tables. तो हो सकता है कि ये fact table का जो dimension table है that belongs to some दूसरा fact table as well, which means that fact tables may have common dimension tables. So if you go by this structure, it looks like a series of stars connected to each other. Hence it is also called as galaxy schema. For example, ये रहा इसमें दिया हुआ है fact table for placement. This is fact table for workshop. So these are the different dimensions in which the student dimension and the TPO dimension is common to placement and workshop as well. So this type of structure, which is having more than one, say two or the more, like more than one fact table and dimension tables, which may be common to the fact table present. So this type of structure is called as fact constellation schema or say galaxy schema. Next we study is a factless fact table. The factless fact table, as you see the name itself is factless, यानी हम जो भी स्टोर करते हैं फैक्ट टेबल में तो हम कीज ही स्टोर करते हैं बट जो भी डायमेंशन होते हैं उसके कोई भी मेजर्स स्टोर नहीं करते यानी डायमेंशंस के जो भी एट्रीब्यूट्स रहते हैं वो नहीं स्टोर करते सी फॉर एग्जांपल दिस इज द टेबल गिवन ओवर हियर ये जो फैक्ट टेबल है उसमें हमने सिर्फ कीज स्टोर की है और इसके रिलेटेड जो जो डायमेंशंस है उसका सिर्फ नाम मेंशन किया हुआ है इसके मेजर्स यानी ये डायमेंशन अकाउंट डायमेंशन का एट्रीब्यूट्स क्या क्या है लोन का एट्रीब्यूट्स क्या क्या है दैट इन डिटेल वी आर नॉट स्टोरिंग so such kind of structure such kind of database technique is known as factless fact tables. And the last we study, which is important for you all to study after this directly, is the aggregate fact tables. Now, aggregate fact tables is combination of two or more fact tables, not like factless constellations, but aggregation in the sense where they come together यानी उनका एक फैक्ट टेबल से दूसरे फैक्ट टेबल को एक्सेस करना पॉसिबल हो if and when needed, if and when such events occur. So this process helps to retrieve results faster. It gives quick performances and it speeds up the process. So this was all about this chapter. In this chapter, ये रहा ये examples है. This examples you have to go through, you have to understand and make a note of it and submit it to me by tomorrow 10 a.m. So please let me know अगर कुछ doubts होगा, कुछ issues होगा. Because unless you practice this, it is not possible to understand star schema and snowflake schema, how to convert it or how to create it, be it star, snowflake or galaxy schemas. So please prepare well and submit the homework. Thank you.